ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਸ ਲਾਈਵ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਨਿਲੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। To Ashmita, you and as well as all the viewers. I'm glad to be a part of your program today. Yes, we are in this unprecedented times, and I think we all in the health community, we want to share and help each other so that we come out of this crisis. And as a part of that, I'm here today with you. मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਲੇਸ਼ ਸੋਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕੁਈਨਸ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਲ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ pick up and drop off service complimentary from your clinics. So tell us, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ just in case ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ familiar ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। Ashmita, I am a physical therapist for about 30 years, and we have a team of clinicians and who include a lot of our Punjabi-speaking staff. And we have locations in Queens, about 8 locations in Queens, and we serve people from all ethnic groups. But we are very proud to serve our own community. क्योंकि हम हमारी भाषा में बात कर सकते हैं. I'm good at Hindi, a little Punjabi. So what we do in our office is that we treat all dysfunctions, musculoskeletal dysfunctions. And we are proud of being a practice who cares and who delivers all this treatment with compassion. So I have interacted in gurudwaras, I've interacted in health fairs and a lot of other public venues. And what I've gathered is we have an impression of being a part of a caring team for our patients. Gee, and it certainly feels that way. I've been to a couple of your clinics. The patients usually seem pretty happy to be there, so you must be doing something right. Dr. Soni, ਸਾਡੇ ਇਸ program ਤੇ ਇਸ channel ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ about what coronavirus, what COVID symptoms look like, what people should know in a proactive, preventative situation. But ਜਦੋਂ coronavirus ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ widespread ਹੈਗੀ illness, ਇਹ illness ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ spread ਹੁੰਦੀ ਹੈ, so there is a chance that a lot of people will end up getting the virus, right? So they get the virus, they recover. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ long lasting physical changes ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਬਟ before we get into all of those details, right, all of the actual techniques and the tips and all of that, tell us a little bit ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ personal experience ਰਿਹਾ ਹੈ। You're also in New York, right? So you're a medical professional, you have friends, colleagues, a lot of people that have been dealing with this on the front lines. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ experience ਹੈਗਾ in terms of the physical effects after you've had COVID? So I'll just group it in few ways. One is when you have COVID and आपको just mild symptoms हो, जैसे कि आपको खाली बुखार आया हो या खांसी हुई हो, and you do your household measures and things get under control with rest and some loving care. So you're lucky.
But if you get hospitalized or आपको all the medical procedures करना पड़े या intubation करना पड़े, and luckily if you come off that intubation, then there is some physical damage to your lungs. तो वो असर क्या होती है? Lungs are like a balloon, right? They are, I mean, they expand and contract. And if you have fluids in the lung for a long time, then the tissue of the lungs get fibrosed. In simple words, जो लंग्स का इलास्टिक फंक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है. तो उसकी असर ये होती है कि अगर आप रिकवर हो गए कोरोना से और आप घर आए तो आपको थोड़ा सा ही ऐसे थोड़ा एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी करने में आपको सांस चढ़ जाती है. या आप पहले सपोज 5 माइल चल रहे थे, अभी 500 फीट चलने में आपको दिक्कत होती है. सो पीपल विल डिकंडीशन एंड इट्स बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द वायरल इन्फेक्शन टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो आपका लंग फंक्शन कैसे इंप्रूव हो वो आपको देखना पड़ेगा. People will ask, can I recover after having a COVID-19 infection and after hospitalization? Can I get my lungs back to like good functioning? The answer to that is yes. But how long will it take? So अभी तो शुरुआत हुई, लेकिन जॉन हॉपकिंस के रिसर्चर्स कह रहे हैं कि if you are having significant effects on your lungs, it takes about 3 months to about 1 year. That's a long time. Wow. And to recover from all the effects of the COVID infection on your lungs. So that's where I come in. That's where my expert will help you. So what we have done is we have devised an exercise program which is sort of addressing the dysfunctions of the lungs और आपके lungs को कैसे जल्दी से ठीक करे so that आप अपनी एक्टिविटीज वापस करना शुरू करो, जैसे चलना है या बाहर जाना है या कोई फिजिकल काम करना है. So the lungs will be compromised, but we have a solution for that. And Dr. Soni, Hanji. Go ahead. So go ahead. I have besides the lungs, what else happens? मेरे दोस्तों, आपने मुझे पूछा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मेरे बहुत सारे फिजिशियन दोस्त हैं जो अनफॉर्चुनेटली फाइटिंग ऑन द फ्रंट लाइंस by treating patients in the hospital and everywhere, they contracted the virus and they stayed in the hospital for a few days. जब मैं उनको अभी देखने जाता हूँ as a friend as well as a person who can help them get better, मैं देख रहा हूँ उनका severe weight loss होता है. One of my friends had lost like 22 pounds. My goodness. And वो घर में ही चलकर थक जाते हैं. He cannot take the stairs twice. So I'm helping him with physical activity program, जैसे core strengthening exercises and exercises for his limbs, so that he can recover from this weakness. तो मेरा ये experience रहा है कि एक तो हमें वो इन्फेक्शन से मेडिकली फाइट करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो उसकी फिजिकल इफेक्ट है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है. और अगर हम उसको एक सही तरीके से उसको अप्रोच करेंगे, सही हेल्प लेकर अप्रोच करेंगे, तो हमारा फिजिकली फिट होना जल्दी होगा. जी, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है. जी, Dr. Nilesh Soni, once again, it's really good to talk to you. साड़ी गल हो रही है कि कोरोना वायरस होने तो बाद किस तरह दी फिजिकल थेरेपी दी रिकवरी ऑप्शंस लोगों कोल हैगे. At this date इस वायरस बारे इन्नी कम जानकारी हैगी in general, right? That people are just figuring out how it manifests, what the symptoms look like, that the recovery ओदी तक गल लोकी large scale तक कर ही नहीं रहे आज दी डेट विच, right? So but this is something that's very important. लोकां नू पता होना चाहिए that majority of the people अगर उन्हां नू वायरस ए हुंदा है, they will be fine, right? But the recovery can have either long-term damage or the recovery can bring them back to where they were as much as possible. And edi gal aapa is tarah continue rakhange, but ithe aapa ek choti ji break li rukde. Dr. Soni will be sticking around and will continue the conversation live. Break to us par.
ब्रेक तो बाद सारे का स्वागत है। तुसी वेख रहे हो जस लाइव ते जिस तरह पिछले महीने साडे स्पैशल प्रोग्राम जस हैल्पलाइन विच तुहानू वख-वख डॉक्टर्स दे नाल राबता कायम कराया, उन्हां नू तुहाडे नाल मिलाया ताकि उन्हां दा परसपैक्टिव, उन्हां दी जानकारी लैके तुसी भी अवेयर हो सको इस सिचुएशन दे विच। इस तरह हुण कुछ परमानेंट प्रोग्रामिंग तुसी जस पंजाबी ते वेखोगे जिहदे विच इस चीज़ दी भावें ओह करोना वायरस दी या होर कोई हैल्थ रिलेटेड अपडेट्स तुहाडे नाल डेली बेसिस ते शेयर होण। बिकॉज अज की डेट में सानू ये पता लग गया कि हैल्थ की अवेयरनेस एंड हैल्थ की नॉलेज जानकारी बेसिक चीज़ां सारिਆਂ ਨੂੰ पता होनी चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंटायर सोसाइटी एट लार्ज। सो अज आप गल कर रहे हैं साडे स्पैशल गेस्ट दे नाल डॉक्टर नीलेश सोनी जो फिजिकल थैरेपी विच माहिर हैं, उन्होंने वख-वख क्लिनिक्स न्यूयॉर्क विच हैगे पिछले 30 तो वध साल तो। डॉक्टर सोनी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। जी, गुड टू हैव यू डॉक्टर। डॉक्टर जान तो पहले तुसी सानू हल्की जी इंट्रोडक्शन दी, उदा तो तुहाडे कुछ फिजिकल थैरेपी दे टिप्स भी आंदे सी जस पंजाबी ते तुहाडी जो सर्विसेज हैं उहदे नाल साडे काफ़ी व्यूअर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं स्पैशली इन द न्यूयॉर्क एरिया। बट डॉक्टर सोनी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀਕਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਨੈਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ यूज़ कर सकते हो। बट बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द प्लान, यू नो, एक काफ़ी जिद्दां कहंदे ना, आई एम श्योर इट्स अ प्रीटी डीप इन्वॉल्वड एंड सोफिस्टिकेटेड प्लान, सो वो एक एपिसोड विच तक कवर डेफिनेटली नहीं होएगा। बट बिफोर दैट थोड़ा जिहा सानू दसो अ लिटिल बिट अबाउट द मेकअप और द टारगेट काइंड ऑफ पेशेंट्स यू हैव, राइट? तुहाडे जो एवरेज क्लिनिक दे विच भी आंदे उन्हां दा किस तरह दा यू नो लाइक किस तरह दी उन्हां दी उम्र, किस तरह दी उन्हां नू डिसेबिलिटीज़ होंदी है। प्लस ऑल्सो नाउ जो सानू पता है कि करोना वायरस सब तो ज़्यादा साडे बजुर्गों को अफेक्ट करता है, राइट? एंड उन्हां दे विच किस तरह की वीकनेस आ सकती है तो उन्हां लई किस तरह की स्पैशल फिजिकल थैरेपी होनी चाहिए। हुण कोई बजुर्ग जिम तक जाके यू नो दौड़ नहीं ला सकता, राइट? इफ दे आर ट्राइंग टू गेट देयर एनर्जी बैक। सो ये थोड़ा जिहा अपना एक्सपीरियंस सानू दसो इस एज ग्रुप दे नाल। श्योर। तो कोइंसिडेंटली coronavirus is affecting more people over the age of 60, or what we call community dwelling older adults. And unfortunately, they are the group of patients who have other diseases, like they may have diabetes या उनको blood pressure हो, और वो वजह से उनको ये कोरोना वायरस का जो असर है वो बहुत ज़्यादा होता है। For their benefit, I must tell that I have specialized in geriatrics. So since past 30 years, I'm practicing as a physical therapist, but my primary love of practice is older adults. So I'm one of the few clinicians in New York who have specialized in geriatrics. Geriatrics means caring for the elderly. So I'll continue the dialogue कि हम बता रहे थे कि lungs को असर होता है, but in the elderly there is another part which is called deconditioning. वो क्या होता है कि अगर आपको कोई भी बीमारी हो, आपकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, ऊपर से आपको ये बुखार आएगा, आप खा नहीं सकोगे, तो आप ओवरऑल वीक हो जाते हो, आपकी मस्कुलर सिस्टम ओवरऑल वीक हो जाती है, एंड देन यू गेट इन्वॉल्व्ड इनटू अ विशियस सर्कल ऑफ inactivity leading to weakness leading to more inactivity, and it goes in circles, right? So that is in a nutshell called deconditioning. तो हमारे पास जो अगर कोरोना वायरस को किसी को हुआ है और दे रिकवर हुए और उनको ये deconditioning हुआ है, तो we keep that fact in mind before we devise the exercise program for them. And as a matter of fact, elderly people are the ones who have been targeted to have such deconditioning. तो क्या होगा अगर कोरोना वायरस से बच गए तो घर अगर गिरे तो, या उनको चलना नहीं हुआ तो,
या अभी उनको सहारा देना पड़ा तो there are many other things which will happen to your body besides just effect on your lungs. So that's the part I wanted to discuss with you, that we have kept those angles in mind, that besides exercising the lungs, you will have to work with a person's balance. You'll have to work with a person's strength, lower extremity strength, and their overall एक्टिविटी एंड्योरेंस, माने कि कोई भी चीज लंबे समय तक करने की क्षमता, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ता है. And I've been practicing that for a while, so it's very easy for me to accommodate that into my program. जी 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 डॉक्टर सोनी ज़रूर ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੋਲਡਰਸ your physical limbs in motion, right? But physical therapy ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ organs ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, right? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ lungs ਹੈਗੀਆਂ, is there physical therapy, can it improve your organs such as your lungs? So definitely. So breathing exercise is कोरोना के बारे में बहुत सारे लोगों ने आपके टेलीविजन पर आकर बताया होगा, but as far as physical activity is concerned, क्या होता है कि जो ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होता, उसकी वजह से अगर जब आप फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करो या कोशिश करो तो यू बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, मीन्स आपको सांस फूल जाएगी. तो एक्सरसाइज करने से, फिजिकल एक्सरसाइज करने से, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो करने से आपकी वो सांस फूलना कम होगा. So we have something called diaphragmatic breathing. मैं technical words use कम करूँगा अभी, but we have certain breathing techniques which we can teach you, due to which you will be able to gain more, your ability to breathe better and do such activities better. So lungs, definitely we are here to help you to improve your lungs. And in fact, so there are two things. I'm here to help my community. And our community has a lot of elderly patients who are having two challenges. One, definitely, if they're affected by corona, it's a battle to fight the disease. और दूसरा है language barrier. So when they go out and they are trying to explain themselves कि बेटे मुझे ये हो रहा है, so I'm there to hear and listen to them and understand them in their language. As you might be aware of, कि मेरे अलावा I have more than 12 Punjabi speaking licensed staff who are able to understand and converse much better than me in Punjabi. So I'll be of great help to them. And see, what I see is this is the time. Of course, we are clinicians and we have practices and all those stuff. But I think this is the time to bring out all our energies and put it together to do our best to bring our community back to normal. क्योंकि अगर आप बुजुर्ग हो, अभी आप घर पर बैठे हो, आपके मन में यही है कि कैसे मैं बन सके उतना जल्दी एक्टिव हो जाऊं. I become social again, I become functional again, and that precisely is my concern as far as our community is concerned. I want to contribute, and that's why I'm working hard, even though my offices were closed. In fact, as a matter of fact, I was going to just ask you, yes, do tell us about the telemedicine, because I was just going to ask you. Unfortunately, we don't have a lot of time, but मैं सारे दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨਗੇ, same day, same time, every Tuesday at 7 p.m. But ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, right? Including something like getting a consultation or visiting a healthcare professional through their computer, right? ਜਿੱਦਾਂ telemedicine ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ all of a sudden ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ. Telemedicine as a field has been around ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਈ, right? But ਹੁਣ telemedicine ਤੇ focus ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, and you are no different. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ patients ਨਾਲ remotely connect ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋ, and you're able to give them some help this way, correct? 110%. And as a matter of fact, we have offered all our past patients a courtesy telemedicine, tele-rehab consultation. It doesn't take anything except picking up a phone, dial our numbers and request that. And one of my staff who speaks Punjabi will get back to you
and get on a video conference call with you to help you. तो हम करते ही है. And on top of it, in the coming weeks, I will specifically show actionable stuff up here. जो वो घर पर बैठकर, of course, with right medical advice, they'll be able to execute that to help themselves. Wonderful. Dr. Nilesh Soni, always a pleasure. And मैं दर्शकों ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲਨੈਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ, we look forward to having you next week. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, you have devised a special physical therapy regimen ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर joining us this evening. My pleasure. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਅ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ।